नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। आज हम फिर आपके सामने हैं विद स्टारलाइट विद पायल वर्मा, which is co-powered and sponsored by Amber, a non-profit organization and a trust believing in spreading wellness. So आज मैं कहूँगी कि आज का चैप्टर, आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड आप बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा। एवरी मोमेंट you're going to feel, अरे अभी उठे तो कुछ मिस हुआ. We have a very very special guest with us today and you're going to thank your stars कि आपने ये एपिसोड लाइव कैच किया है या बाद में आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं. You're really going to thank me for that. I'll be flooded with thank you messages. So let me welcome on Starlight with Payal Varma our very very dear Dr. Gouri Kumra. I welcome you to our show and I would say that I'm feeling so good कि आप टाइम निकाल के आज हमारे साथ आए हो. छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहूंगी to our viewers. Well, she is a very special guest and special क्यों है आपको पता चल जाएगा. Well, she is a remarkable doctor and a healer. She's dedicated over 40 years of transforming lives through her unique healing techniques. Yes, you got that right. She believes that true healing goes beyond prescriptions. Wow. And understanding the human core, human emotions is a very integral part of her therapy, her treatment, the way she looks at her clients or her patients, I would say. So, having worked with hundreds of people, she combines the power of art. You can all see this creation. So, she combines art, emotional understanding, and music therapy to help people in a holistic healing. Music, according to her, is more than that, it is medicine. It invokes motor reflexes, improves cognitive behavior, and definitely it calms the mind. So we dive into fascinating connection between music, healing emotions, and human soul with our guest this afternoon, Doctor. Welcome to the show and I'm so happy that you will be sharing so many insights with all our followers and viewers. तो आपको कैसा लग रहा है आज इस लाइव पॉडकास्ट में आके? Can you? Namaste, Payal. Namaskar. And namaste to the audience. Thank you for having me here with you and including me in your electromagnetic field. My God, okay. I hope we can enhance the electromagnetic field of the audience. Wow, absolutely. And heal them. So, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रंगों के बीच में प्यार बांटने आई हूँ. प्यार, एतबार और ब्रह्मांड से हेलो बोलने आई. My God, amazing. And you would want to know that Dr. Kumra is 40 years practicing. She's a gynecologist. And you imagine with hardcore medicine and, doing all the deliveries that you've been doing, bringing life into the world. More than 10,000. My God, more than 10,000. Guys, that's huge. So आप सोच सकते हैं कि क्या prominent person है आज हमारे साथ. And with that, she has brought color into the lives of her patients and she has intertwined medical science with therapy. That's amazing and applauding. I mean, kudos to you. Thanks to God who triggered this sense. I mean, this is a very deadly combination, I'll say. I mean, you're perfect actually. No. So I would actually want a little insight on this, that you are into your profession as a hardcore doctor, a gynecologist, right? And what else in the medical field और क्या-क्या हम जोड़ सकते हैं आपके degrees पे? Can you throw light on that? I treat infertility without IVF. Okay. And I have resurrected many depressed patients out of their dark hole. Wow. And today I think I'm not a doctor, but I'm a health coach, if I can say. Right. Isn't it? Because for me, performance is more than prescription. प्रिस्क्रिप्शन तो एक कोरे कागज पे आप 2 लाइनें लिख देते हो, ये खा लो वो खा लो,
और वो एक छोटी सी टैबलेट क्या आपको रिसरेक्ट करेगी, ओके, पर आपकी सोच आपको रिसरेक्ट करेगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपके जज्बात आपको रिसरेक्ट करेंगे। एंड अगर आप मैं को मार के, अगर आप सोचो कि मैं एक बोतल हूं और इस बोतल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, and they are in quantum motion, then your ego is treated, isn't एब्सोल्युटली it? राइट, जब वो एब्सोल्युटली मैं राइट, आ जाता है तो वो एक रावण का फॉर्म आ जाता है, करेक्ट, 10 हेड्स। सही है, तो जब रावण मरने वाला था, तो राम ने कहा कि लक्ष्मण जा रावण से ज्ञान ले ले। तो रावण ने कहा, अरे वो करता धरता, उसने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? सो ही सेड, शायद इसलिए भेजा बिकॉज ही वाज सो बुद्धिमान ना। यस, रावण सेड कि उसने उन्होंने सर्वज्ञानी, उन्होंने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा कि वो मुझ तुमसे एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकते, पर मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं अहंकारी बन गया और अहंकार ने मुझे दफन कर दिया। सही है, अगर मैं अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता तो आज मैं भी राम बनता, ट्रू, isn't it? हम, So it is not important to be an MBBS, a DGO, an MD, but it is important to be a good, positive human being फर्स्ट, first, फर्स्ट, फर्स्ट, and then add colors. My duty is not to instill fear in you people, but to give you confidence. एक छोटी सी टैबलेट क्या कर देगी, सही है, है ना? जब तक कि मुझे ये नहीं एहसास होगा कि मेरे जीवा से खाना अंदर जाता है, इसको मुझे आराम से खाना है, सही है, मैं जब इसको चू करूंगी तो ये मेरे अंदर जाएगा, अगर मैं इसको चू नहीं करूंगी तो ये कल को पत्थर बन जाएगा, वो गॉल बिल्कुल, ब्लैडर स्टोन बन गया, किडनी स्टोन बन गया, करेक्ट, है ना? करेक्ट, करेक्ट, और एक छोटा सा प्यारा सा पाथुर कुची पत्ता है या पाथुर चाटा है, अगर आप उसको खाओ तो वो आपके स्टोन को डिसॉल्व कर देता ओह, ओके, है ना? सो तो व्यूअर्स मेक अ नोट ऑफ दैट। वो आप एक बार सो वापस बता दें, आपने क्या क्या टिप एक छोटी सी दी, क्या खान, पाथुर कुची पत्ता या ओके, पाथुर चाटा, और यहाँ तक कि इंटरनेट में इसको कबूल किया गया है एज पाथुर चाटा, ओके, आप सर्च कर सकते हो। डेफिनेटली मैं भी करके एंड देखूंगी, अगर मैं जड़ी बूटी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने आप को खड़ा कर सकती हूँ, करेक्ट, तो मुझे दवाई खाने की क्या जरूरत? इस पे आई विल कम बैक टू आवर व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर दैट इंसाइट डॉक्टर कुमरा। कैन यू इमेजिन 40 years she is a professional doctor, she's been treating patients, she's been doing so many deliveries, over 10,000 babies she has delivered, and you know, like, of course OT is her second home, that is the operation theater, but look at her Mind insight. you, mind you, in the OT also, I have music being played. I Oh, do not allow human beings to talk because poro ninda, poro chorcha, that's PNPC. yes, मैं yes, नहीं चाहती कि लोग चुगली करें, सिस्टर्स लोग रोए धोए, ये नहीं है वो नहीं है, और आने वाले बच्चे को मैं आगमन करती हूँ विद म्यूजिक, with a lot of love. अगर मैं अपने आप को प्यार नहीं कर सकती तो मैं अपने पेशेंट्स को क्या प्यार करूंगी? माय गॉड, सो दैट कितनी पावरफुल थॉट्स डॉक्टर ने सामने रखी है, कि सोचिए ओटी में वो म्यूजिक प्ले करती हैं, ये तो बहुत ही यूनिक है। आई थिंक मैं खुद एक एनर्जी डॉक्टर हूँ, आई एम अ प्राणिक हीलर, और मेरे इतने लंबे टेन्योर में आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी एनी मेडिकल डॉक्टर, क्योंकि मैं एक मेडिकल टीम के साथ काम करती हूँ जहाँ डॉक्टर्स म्यूजिक ओटी में प्ले करते हो। सो आई एम टेलिंग यू, यू आर वन ऑफ अ काइंड, एंड आपको जितना भी मैं प्रेज करूं वो कम ही होने वाला है डॉक्टर कुमरा। नॉट रियली, सो पर एक मैं चीज आप मुझे बताइए, कि आपने कहा म्यूजिक आप प्ले करते हो, सो
आपको कब ये पता चला या कब आपको ये 40 इयर्स की जर्नी में जो आपकी एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट मेडिकल साइंस के अलावा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या हम ऑरा चक्रास ये जो चीजें हैं कलर्स कलर इज अ थेरेपी म्यूजिक इज अ राइट। थेरेपी ये आपको कब आपके इस जर्नी में रियलाइज हुआ क्योंकि डे वन तो हुआ नहीं होगा नॉट एट ऑल, यू इट हैड इज स्टडीड फॉर मेडिकल and you qualified as a gynecologist. Can you get to us your journey of discovering this part या and combining it with your normal medical practice? राइट। This happened in 2000. I had an accident, Okay. and I used to be a very chanchal ladki. Okay. So I used to wear stilettos, and I went to Oh. Gangor to have breakfast in the morning, Okay. and my heel got locked with the door, and the door fell on my back, and subsequently I was paralyzed. Oh. And I consulted various doctors, and I was in the peak of my career. To become paralyzed was not an easy acceptance. So I consulted Dr. Ahmed Alam, so Dr. Muhammad Alam, who's no more. He said, Gauri, मैं तुम्हारी spine में surgery नहीं करूँगा, मैं तुम्हें traction दूंगा. Okay. एंड वही नर्सिंग होम के मालिक थे डॉक्टर जमील. उन्होंने मुझे दो होम्योपैथी दवाई दी. एक थी मैट मोर Hmm. और दूसरी थी लेडम पाल. Okay. Yeah. ये दोनों दवाइयाँ खाने से मेरी पेन इंजरी वो सब कम होती गई. अच्छा. एंड एग्जैक्टली 6 weeks में विद ट्रैक्शन and this medicine, I was up and about and operating. But mind you, audience, while I was paralyzed, I still operated. I would take the crutches. I was hospitalized in a nursing home in room number 111, Oh. which was next to the OT. And I would go with the crutches, do the surgery, and come back and lie down because I wanted not to give up. Wow. So That's seriously determination amazing. thi, and I fought my injury, and thanks to God that I did not have a spinal surgery, Yes. and I am what I am till now. So willpower चाहिए, acceptance कि हम हार नहीं सकते, Correct. and 10 ईगो को कत्ल करके एक एलोपैथी डॉक्टर ने होम्योपैथी दवाई खाई, ट्रैक्शन लिया, Correct. फिजियोथेरेपी की, और फिर आगे के लिए सोचा कि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो मेरे इनफर्टाइल कपल्स क्यों नहीं ठीक हो सकते, बिल्कुल. मेरी एडोलेसेंट लड़कियां क्यों नहीं ठीक हो सकती. कमिंग टू दिस हम थोड़ा मेडिकल के बारे में भी थोड़ा जानते हैं आपसे बिकॉज या बहुत इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स. श्योर श्योर. सो डॉक्टर ऐसा है कि अभी स्पेशली मेरे पास भी ऐसे बहुत केसेस आते हैं ऑफ इनफर्टिलिटी या हम मैम बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमारा बेबी नहीं हो रहा है 12 साल हो गए हैं 15 साल हो गए हैं बट और कईयों के तो 3 3 4 4 मिसकैरेजेस हो जाते हैं एंड उसके बाद दे आर नॉट एबल टू कंसीव ऑल्सो. अलग अलग टाइप के केसेस हैं यंग गर्ल्स आर हैविंग ऑल sorts ऑफ menstrual issues and you can understand बहुत kind of issues they have which are gynecological in nature. So इसका ये पहले इतना नहीं होता था या अभी ज्यादा फोकस में आ गया इससे पता है because I find there are too many patients who are suffering from infertility. They are unable to bear children जबकि medically उन पे सब fit, all the tests are correct. So what according to you is the reason that they are unable to conceive? Because they are overthinking, they have to start rethinking. They are overloaded with thoughts. The biorhythm has changed because they're on night calls. They are influenced by digital media, mobile, Hmm. लैपटॉप. लैपटॉप को आप इधर रख के आप पढ़ते हो तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके ऑर्गन्स को हैम्पर करती हैं. आप Okay. देखते हो तो वो कलर्स आपके थॉट प्रोसेस को हैम्पर करता है. एंड ग्रीड इज phenomenal, isn't it? मैं एक और रील देख लूं.
रील ओके, देख लूं, हाँ 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 हाँ, मैं और गॉसिप कर लूं. करेक्ट. So you're not a high thinker. You are trying to achieve materialistic goods, but you're not trying to achieve or conquer your body. ओके. And प्यार आजकल रहा नहीं है. पहले हम्म. दिनों में तो हमारी दादी परदादी would have बच्चा along with the बहू. करेक्ट Creativity was a phenomenon. करेक्ट करेक्ट. Today, creativity of that kind is a waste. आज सरोगेसी आ गई है. करेक्ट. आज IVF आ गया है. जी. आज लोगों के पास टाइम नहीं है 9 महीने वेट करने का. आप अच्छा, प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो. so you have such patients coming to you जो बोलते हैं हमारे पास 9 महीने का टाइम नहीं है. नहीं, they have so many meetings to attend. ओह, मैडम अबॉर्शन कर दीजिए. सॉरी, मैं नहीं करती हूँ. भाई मेरी कल मीटिंग है, मुझे जाना है, आप तो आज ही कर दो. सो हमारी चाहत अलग हो गई है. हम our goals are different. Don't we give a mobile to our child to see and eat? yes, Do yes, we yes, have very time common. to talk to our children? We are all with our mobiles. तो डॉक्टर इस पूरे कॉन्वर्सेशन से मुझे समझ में जो आ रहा है, आप दैट मीन्स यू आर नॉट ओनली अ बिलीवर, लेकिन आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि ह्यूमन माइंड, इमोशंस, ये सब बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं इन कंसेप्शन. Definitely, मतलब इट्स जस्ट definitely. नॉट द फिजिकल पार्ट ऑफ Not at all. intercourse or something, it is way beyond that. Of course. So how do you See, counsel your patients? define sex, define masturbation, define relationship. Right. I would go for relationship, Okay. isn't it? Absolutely. When I can understand you Correct. and you are my partner, Yes. I will respond to you without any encumbrance. Or inhibitions. Inhibitions, Correct. yeah. Correct. I am foot There is a loose. surrender. Yeah. Form of surrender. पर आज के बच्चे जो इंटीमेसी में बिलीव करते हैं, जी. that is just an exercise. It's like gymming together Okay. without the mind. Basically, it is more just left on the physical body. लेकिन आप actually उसमें you are not Mentally you're not mentally involved. you're not involved. Mentally you're thinking, हाँ, when will it end? And then Yes, we yes. go away and And काम करना है. जैसे मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं, I've seen doctor that they become very mechanical. ये पीरियड सेफ बोला है डॉक्टर ने, मैम आपने बोला था ये पीरियड सेफ है, वी ट्राइड कुछ नहीं हुआ मैम, इस बार भी नहीं. ऐसे लाइक हेलो, यू आर नॉट अ मशीन. आई एम श्योर ऐसे भी आपको केसेस आते हैं, मैम आपने तो सेफ पीरियड आपने बोला था, दिस इज अ वेरी वेरी फर्टाइल पीरियड, हमने वी आर ट्राइंग एवरी मंथ वी आर ट्राइंग, लेकिन हमारा तो नहीं हो रहा है. आई मीन ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे आपके पास. Of course, because they're not involved Because it's not 100%, yeah, in because this. it's उन्हें just not the चाहिए timing. सोशल स्टेटस के लिए चाहिए, उन्हें प्यार के लिए नहीं चाहिए. सोशल स्टेटस चाहिए कि हमने शादी किया, बच्चा एक हो जाना चाहिए, हमारा स्टेटस हो जाता है कि हम माँ बाप हैं, बस. You know, I'm so happy to see the way you are bringing out energy and how important energy is for our sustenance. Of हम course. actually we are basically energy beings. अगर हम देखें तो we are not physics in motion. No. We are not just hard mass. We have an electromagnetic field. Of We have course. an aura, and we are so much of emotions. We have so much more than just this skin. You know, Payal, your heart generates an electromagnetic Correct. field, Correct. which is 4,000 times more than the brain. Correct. Very So correct. अगर मेरे हाथ में लव नहीं है तो कख नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. कख का मतलब होता है कि Ashes. एक छोटा सा पार्टिकल भी नहीं है. हाँ. So we are very right when we say that humanity first, love first, compassion first, empathy first, not sympathy, mind you, empathy. Dry love नहीं होना चाहिए. Correct. There should be emotions involved. There has to be seed love. You have to appreciate every atom and molecule. तो आपको कभी ऐसा हुआ है that you have been able to counsel someone कि abortion मत करो? हर रोज करती हूँ कि अबॉर्शन बात मत मान करो. के they have और gone वो ahead. कहते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं हुआ, तो मैं उनको पूछती हूँ, तो मिलने के लिए राइट टाइम था? Correct. मिलने के लिए राइट टाइम है, पर बच्चा करने के लिए राइट टाइम नहीं है. तो राइट टाइम का मतलब क्या है, मुझे समझाओ. तो
were you able to convince any of your patients? ऐसा कोई भी किस्सा याद है जहाँ आप बोल पाए, आप उनको समझा पाए काउंसिल करके कि that बेटा don't abort, go with the pregnancy, and they went ahead? ऐसा भी कोई केस आपको याद आता है? Yes, there's a mixed view, you know. Some listen, some don't. Some may be influenced by their mother-in-law. Sometimes the mother-in-law comes. Okay. And then अभी कली का केस देखो, त्विषा कपूर शर्मा, त्विषा शर्मा, Right, right, क्या हुआ? अबॉर्शन हुआ उसका. right. There was so much of melodrama, True that. है ना? True that. So it is, you know, having a baby is not an individual or a couple decision. It is a family decision. तो भाई शादी करो या लिव इन रिलेशनशिप में रहो, पर रहो अंडरस्टैंडिंग के साथ. Don't come in for physicality. That's not going to be sustained. True. Come with an understanding, because it's the life journey with a life partner, and you create an ambience in your house. True that. Do not do it with nafrat. Actually, है ना? sometimes और पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता. लाइफ तो बिल्कुल ही नहीं. एकदम भी नहीं. लाइफ लाइफ एकदम. एक लाइफ. और मैं अपनी जिंदगी इन सब खिलौनों से खरीद रही हूँ, कलर तो से इसी खरीद पे रही हम हूँ. आएंगे. इससे पहले मैं थोड़ा आई विल ट्राई टू टेक योर अटेंशन टू दिस ब्यूटीफुल painting and this thing masterpiece that we have. Every masterpiece begins with belief. Thank you for creating miracles and making the words ma and pa possible for countless hearts. So this was gifted to Dr. Kumra just yesterday, right? So this has a story. जो मैंने बिफोर वी वेंट लाइव मैंने समझा डॉक्टर गौरी कुमरा से. तो आप एग्जैक्टली इसका मतलब आप अगर शॉर्ट में व्यूअर्स को बता पाए कि ये क्या है. देयर इज अ बेबी Yeah. विद कलर्स. So I would want everyone to hear this. पहली बात, co-cue art with every egg, when every egg counts. Wow. हाँ, तो हर मोती, हर मन का माला में बहुमूल्य है. Right. हर ये मन का बहुमूल्य है. Right. And this egg, when it meets its counterpart, the sperm, there is collision. Okay. There is thunderstorm. Okay. There is exchange of jellies, chemicals, Right. electric current. Correct. And that is vibration, resonance, and frequency, which you see in red and blue. Blue is the venous blood flow, deoxygenated. Red is the oxygenated. Wow. तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है. Okay. और सुर और ताल ही ग्रोथ है. Wow. बिना सुर, इस पे बिना थोड़ा बताएं. ताल पे ग्रोथ आ ही नहीं सकती. बिना प्यार के ग्रोथ आ ही नहीं सकती. तो वो एक सेल जाइगोट, Right. एम्ब्रायो बनता है. Embryo. Yeah. एम्ब्रायो के बाद वो फिर फीटस बनता है, कंसेप्टस बनता है. Correct. कंसेप्टस के बाद वो फीटस बनता है. अगर प्यार नहीं हो, अगर माँ का प्यार बच्चा परसीव ना करे, तो ग्रोथ नहीं होती है, अबॉर्शन होता है, रिजेक्शन होती है. Okay. Yes, I agree with When that. the mother is not able to hold the child, Hold the child. there is abortion. So You know what? एक रिश्ता कायम होता है between the soul and the mother. The soul says, "Are you ready to hold me?" Yes. And the mother says, "Yes." Then the partnership sustains. But once there is a disagreement, environmental controversies, then the soul says, "Bye. I reject your womb." So when I do surgery to take the baby out, I scrub my hands and I say, "Soul, do you want me to touch you with my hands?" And the day I forget, the labor is difficult. Really? But the Oh. day I say, "Will you allow me to grip your head?" Beautiful. I get full Cooperation from that soul. right? The So baby is cooperating. when we started the session, you said something like this and this. So you were taking permission from the kainat.
Correct. from the environment. Very true. So I was taking permission from that soul. Wonderful concept. Wonderful. I mean, है this is ना? like इजाजत ली मैंने बिल्कुल, बिल्कुल. मैंने नॉक नॉक किया. That am I allowed? Am I allowed? And then it's going to be super smooth. Yeah. So it's like, this is such a beautiful, I mean, this is simply amazing. I'm short of words to explain. I just want this episode, even इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा share करिए, because this theory going out to every human being, this has the power, this episode has the power to change the way you look at life, the way you look at your married relationship, the way you look at your life partner, and the way you look at conception, the way you look at bringing another soul into the world. That is what Dr. Kumra is doing. That's how she's contributing to the society by just not being a gynecologist, but being a healer, being a therapist in the truest form. And this was beautiful. And मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे है, तो ये what kind of art is this? Like, are you into some form of like, ये क्या है? मुझे भी नहीं पता. आप थोड़ा सा ये viewers को बता पाएंगे in short? Bachcho, I got this lesson, one lesson in my life from Dr. Yang, who is a doctor and a cobbler, both together. And he's right now 94. And in Bangkok, I met him once and he told me that तुम खाक की पेंटर हो, तुम कॉपी करती हो. So मुझे बहुत गुस्सा लगा कि मुझे मेरी कुर्सी पे बैठ के मुझे किसी ने कहा कि यू आर अ कॉपी कैट, यू आर अ चीटर. सो मुझे लगा कि मैं उससे मुक्का मारूं, पर मैंने कहा यस सर, हाउ शुड आई रिफॉर्म माई सेल्फ. एंड ही सेड that you throw water on the canvas and throw colors and tilt it. Don't use brush, because brush is a symbol of ego. It's a symbol of skills. Yes. सो ईगो को तुम फेंक दो और पानी और कलर को कंट्रोल करो. मतलब अपनी डिजायर और अपनी चाहत, दोनों के मीनिंग्स है. डिजायर इज नेगेटिव एंड चाहत इज ऑल्सो परसुएशन. करेक्ट. राइट. इनको कंट्रोल करके स्टेनिंग करो, फिर उसको धो डालो. ईगो धो दिया, ओके. फिर रिकलर करो, ऐसे 3 बार करो. और जो स्टेनिंग हो उसको देखो. एंड बिलीव मी ऑडियंस, आई स्टार्टेड वेयरिंग स्पेक्स in class 4 and my power was 2.5 cylindrical glasses. I had astigmatism, and at the age of 50 when I started painting, by 55 I had no glasses and I still have no glasses, and I'm touching 66 today. So 11 years of no glasses, and yesterday I had an eye checkup and they said 6/6 vision. Man, fantastic. Because I have global perception. So You have to have. see that, like, there is something beyond body. Yeah. Try to understand there is something beyond body which is very, very powerful. Beyond prescription. It's yes, there is. We are energy balls. Trust me, we are all made of pure energy, and we all need to understand that आप अपने सूक्ष्म शरीर का ख्याल रखो. There is a connection between your mind, your body, and your soul. And your gut. Yes. जो खाओगे वही दिखाओगे. Whatever, वो तो कहते ही हैं कि जैसा खान पान वैसा ही आपकी सोच. रहन सहन वैसी सोच. Yeah. So ideally, she's a perfect combination of, I would say, a sense of medical science, blending it with something that goes beyond. So we have this painting. I'm little थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस कॉन्वर्सेशन को. डॉक्टर ये क्या प्रिडिक्ट करता है? फॉर मी दिस इज लाइक, ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज सैटर्न बिकॉज रिंग्स है. तो ये यूनिवर्स है एंड इट ऑफ कोर्स हैज कलर्स. ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो प्लैनेट्स हैं. तो ये क्या है? आई मीन, तो दिस इज व्हाट आई मीन. मैं अब हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि ये क्या है. ये एक्चुअली देखा जाए एम्प्टीनेस है.
है ना, एम्प्टीनेस है So ये इसमें। क्या किसी इसमें ने कोई बनाया फॉर्म है? यस, किसी some एक बच्चे ने बनाया okay. So ड्यूरिंग द आर्ट कैंप, एंड दिस इज यू नो लाइक atoms, quantum, protons moving. Life is dark matter and dark energy. Dark energy moves, but dark matter is more than light matter, right? right. So our whole universe, our whole सृष्टि is dark matter. उसमें से डार्क एनर्जी उत्पन्न होती है, वो मूव करती है। सो शॉर्ट में हर रात के बाद दिन आता ही है। ट्रू। सूर्य राइज करता है, और इसमें क्या है, ये यूनिवर्स है, इसमें तारे हैं, इसमें होप है, इसमें करिश्मा है। सो इस शख्स जिसने भी ये किया, उसने आप सबको होप दी है कि लाइफ मूव्स ऑन even when you're stagnant, and even when you're not doing anything, you are breathing. That is the biggest miracle. Right? People say कि miracles नहीं होते हैं. She has given, Dr. Kumra has given you through her experience, and of course, many of you know me. My life is full of miracles. Every moment I feel I'm witnessing a miracle pe miracle pe miracle, and she has also, Dr. Kumra has also shared her miraculous journey. उनके ऊपर कितने miracles हुए हैं? Well, this is not miracle. This is also science. Science of emotion, science of mind, science of your aura. It is science of energy, how to manipulate energy to stay healthy. So with that, I would actually want to tell the, I'm sure you know that this is just not enough. आपका इतना moment तो काफी नहीं पड़ने वाला है. I mean, we want you yet for another podcast in our part 2, because we are wanting to understand. हम यहाँ बहुत सारे we are seeing so many gadgets, crystals. So इसकी चर्चा हम to be continued part 2 में करेंगे, because we cannot let her go just like that. She is a powerhouse. She is going to give us so many more insights in our second part 2 of this episode. So Dr. Kumra, just before, yes, so just before we do, yes, before we complete this session, some experiment on me maybe. Yeah. So just tell them what do you feel? I feel the vibration. Right. How far does it go? Now it stopped. It was there. Okay. What do you feel here? So that's a sound with vibration. या सो तो कान सबसे पहला सेंसिटिव ऑर्गन डेवलप होता है, और वो सबसे लास्ट जाता है, और ये सुनना चाहता है पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन। क्या हम कान को कभी भी हेलो हाय बोलते हैं? सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल। इसी के साथ we come to the conclusion of our part 1 of the episode with Dr. Kumra. I would call you an angel in disguise, because she's just not a doctor, she's way beyond that. And trust me, she is building life, she's bringing life into the world, and she's creating more and more aware parents, I would say. So thank you for being on our podcast, Starlight with Payal Varma, co-sponsored and powered by Amber, a charitable trust. And very soon, this is to be continued. We will discuss more about these colorful paintings and all these equipments and the crystals that we see are here in front of us in our upcoming part 2. Thank you so much. Thank you so much. बने रहिए। सारी इंफॉर्मेशन कि आप कैसे डॉक्टर कुमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कैप्शन में रहेगा। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, आपको कैप्शन में मिल जाएगा। विद दैट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।